All right, I think I'm live. Finally. Apologies for being a few minutes late. I started speaking and I realized there's a go live button on the streamyard.com. I'm joining you from Machka Park in Istanbul. And मैं ये कोशिश करूंगा अस्सलाम वालेकुम मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको दोनों अंग्रेजी और Urdu, both in English and Urdu. I try to keep this going because as far as I'm concerned, my target audience is not only in Pakistan and India, but also in the Gulf, the expat community in the Gulf, in Canada, the United States, in the UK, in Europe. So anywhere where there are people that look like me, that maybe talk like me, that's my target audience. And I want to keep it, and New York, of course, all the way. So I want to keep it both in English and in Urdu. But उर्दू इसलिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आपके सामने है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस पाई जा रही हैं टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. तो मेरा ये मकसद था इस चैनल को शुरू करने के लिए कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली एक राब्ता रख सकूं. I can reach you guys directly. I decided to call it Let Ali Show You because I have this tendency during lives. I've been a journalist now for 19 years. I started in 2004, and मुझे कभी सोचा नहीं था मैंने. I didn't think कि एक वक्त आएगा कि जब मुझे अपनी broadcast खुद ही करनी होगी इस तरीके से. And I appreciate already 200 से ऊपर subscribers हो गए हैं YouTube के ऊपर तकरीबन 3 या 4 घंटे में जब से पोस्ट किया था मैंने. और जिस तरह मैं कह रहा था मेरी टारगेट ऑडियंस इन सब जगहों पे मौजूद है. और क्या इशू क्या है, क्या रीजन क्या है, मैंने क्यों इस चैनल का नाम रखा Let Ali Show You. So let me show you where I am. I'm sitting on a bench in beautiful Machka Park. It's the 5th of June. अभी भी हवा में थोड़ी बहुत ठंड है. It's still a bit chilly. And this is one of the few green spaces left in the center of Istanbul. It's a beautiful space. और जैसे ही मौसम तब्दील होता है यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाते हैं. और मैंने भी सोचा कि अपना आगाज एक ऐसी जगह से जहाँ पे इतनी हरियाली है, इतनी खूबसूरती है और इतने लोग निकले हुए हैं, धूप भी निकली हुई है थोड़ी, यहाँ से करना मेरे ख्याल से मुनासिब होगा. अभी मेरे ख्याल से मुझे 12 लोग देख रहे हैं हमें, which is good, I guess. अब 15 हो गए, which is also good, I guess. So let me tell you guys a little bit about the show, a little bit about myself, and what I plan on doing in the next weeks, days ahead. तो Let Ali Show You का जो concept था वो ये था कि जी बातें हर कोई करता है, मगर as far as experiencing जो हम वीडियो का मीडियम यूज कर रहे हैं, लोगों को दिखाना, उनको एक जर्नी पे लेके जाना, उनको अपनी आंखों से दिखाना कि जो आप देख रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और जब वजाहत खान यहाँ पे आए तो उन्होंने बेसिकली ये मुझे आइडिया दिया कि अली आप इतना तुमने काम किया अली, तो मेरे ख्याल से अगर तुम एक नेक्स्ट स्टेप लो और अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करो तो ये तुम्हारे लिए मुनासिब होगा. तो मैंने कहा why not? So let Ali Show You came into being. But this is not just about politics or what's happening in Pakistan or India or anywhere in the world. This is also about living life, basically. जैसे मुझे खाना बनाने का शौक है, अभी लेटली ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं अपना वो भी आपको शायद एक्सपीरियंस कराऊं. मुझे जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, तो शायद मैं आपको अपने साथ थोड़ी ट्रिप्स पे लेके चलूं टू एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स, मे बी यहाँ पे टर्की में, कहीं और. इसके अलावा आजकल फोकस ऑन हेल्थ एंड फिटनेस बहुत हो गया है, तो पिछले 6 महीने से मैंने बॉक्सिंग शुरू की हुई है और मैं अपनी थोड़ी वीडियोस भी आपके साथ पोस्ट करूंगा. तकरीबन मैंने कोई 8 या 9 स्पारिंग सेशंस भी हो चुके हैं मेरे. तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मेरी जिंदगी में क्या बेनिफिट्स आए उसकी वजह से. और एक आई गेस एक जर्नी का, एक सफर का आगाज है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, and a journey in both English and Urdu and maybe a little bit of Turkish, but we'll see. I'm still trying to work on that. It's been 8 years and yani Turkçe çok az konuşuyorum ama devam ediyor. So we'll see how it goes. And with this first introductory episode, I wanted to just set everything right. We're 5 minutes into the broadcast.
make biryani as my first dish. It might not be the best one, but what I will make is dal chawal. My mother taught me this amazing dal chawal recipe, which is basically lentils, fried lentils, and rice. And it's a staple in Karachi where I grew up. And there's a certain flavor that you get with it, right? So I'm going to try that as my first dish for you guys. And I guess journalism as we know it, सहाफत का जब आगाज हुआ मेरी जिंदगी में, और अब तक इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं उसके अंदर. There've been so many changes, there's so many restrictions, there's a woke culture जिसकी हम बात करते हैं. There are things that you can say, that you cannot say. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हमें अपने आप को एग्जिस्ट करना पड़ता है एज अ स्टोरी टेलर. और मैं जानता हूँ मेरे दोस्त पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, जो मुझे रीच आउट करते हैं और बताते हैं कि जी कुछ दिनों पहले ही अपना कुछ लोगों का मैसेज आया कि बेहतर है कि आप तुम बाहर हो, क्योंकि यहाँ पे हम अपने शोज भी कर रहे हैं, हम एंकरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हम वो बात का इजहार नहीं कर सकते जो शायद आप लोग बाहर कर सकते हैं. मगर मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास कोई सीक्रेटिव सोर्सेज नहीं है. मैं अपने जितनी भी सोर्सेज होते हैं उनको ऑन द रिकॉर्ड लेके आने की कोशिश करता हूँ, और अगर ऑन द रिकॉर्ड नहीं लेके आ सकता मैं किसी सोर्स को, तो वो कहानी मुमकिन नहीं हो सकती. यानी ये अनोनिमस सोर्सेज या हिडन सोर्सेज का कोई तस्वुर नहीं है. जैसे हमारा शो ये बढ़ेगा, ये पहला एपिसोड है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं एक्सपर्ट्स को लेके आने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जांपल ब्रसल्स से ईयू के पर्सपेक्टिव जानने के लिए मैं और एक्सपर्ट्स के पास जाने की कोशिश करूंगा. यूक्रेन के अंदर जो फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का जो सिलसिला चला हुआ है, वहां पे क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है, ईरान का क्या रोल है, क्योंकि इतनी सारी चेंजेस आ चुकी हैं. हाल ही में जैसे हमने देखा कि टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी री इलेक्शन जीती. वो 70 साल के हो चुके हैं, 5 साल की और एक टर्म है उनके पास आगे जाके. तो ये सब चीजें हो रही हैं. पाकिस्तान के अंदर आपके सामने सूरत हाल है. इकोनॉमिकली पाकिस्तान बिल्कुल डेविस्टेटेड है. पाकिस्तान इज कम्प्लीटली डेविस्टेटेड, तबाह हो चुका है इकोनॉमिकली. बहुत प्रेशर्स पड़ रहे हैं. वहां पे आप बात करें अपने दोस्तों से जो बिजनेसमैन है, जो कारोबार चला रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि जी आज वो करेंसी वहां पे 300 350 की उन्होंने पकड़ी हुई है, तो आगे जाके उसको वो कितने की होगी. तो ये सब चीजें हैं. ये तो बड़े लोग हैं. इसके अलावा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं. ऐसे लोग भी हैं जो 5 या 10 लोगों को हायर करते हैं कलेक्टिव, उनके साथ काम करते हैं डिफरेंट जगहों पे. तो ये सब चीजें हैं मेरे ख्याल से जिनके ऊपर हमें निगाह डालेंगे हम. ये सफर का आगाज है मेरे लिए भी, आपके लिए भी. और मेरी उम्मीद है क्योंकि इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से लेके चलूं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफर करूं, और हमेशा मूव करता रहूं, आपको हमेशा मूविंग पिक्चर्स दिखाऊं. जैसे मेरे पीछे लोग बैठे हुए हैं, इनकी अपनी जिंदगियां, इनकी अपनी कहानियां हैं. तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग जिनके पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव या उनकी डिफरेंट कहानियां हो, हम उनको भी आगे करें. तो पहला एपिसोड तो इंट्रोडक्शन का है. दूसरा एपिसोड मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ओवरऑल पिक्चर और ईयू का रिस्पांस ब्रसल्स से, वो जुमे के दिन करने का इरादा है. फिर एक और कॉन्सेप्ट है जिसके मैं काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सोचा इसके बारे में. स्पेशली अपना जो हिस्टोरिकल रीडिंग्स अगर आप करें, अगर आप यूएस एक्सपीरियंस इन वियतनाम को देखें, अगर आप वियत कॉन्ग को देखें, तो एक कॉन्सेप्ट सामने आता है नेटिव कोलैबोरेटर का. वो नेटिव्स या वो लोग जो जब बैरूनी पावर्स ने हमला किया, जैसे अफगानिस्तान में हम एनडीएफ की बात करते हैं, वो एक नेटिव कोलैबोरेटर के यूनिट की तरह उभर के सामने आता है. या मगर दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आप अमरीकी या अफगान सोर्सेस की बात करें, तो वो कहते हैं कि जी तालिबान जो थे या जो हैं, वो है नेटिव कोलैबोरेटर पाकिस्तान के. यहाँ तक कि ये इस हकीकत के अंदर, जैसे मेरी रिपोर्टिंग अफगानिस्तान से बड़े साल हो गए, पहली बार मैं गया 2004 में रिपोर्टिंग करने के लिए. तो हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, कंस्पिरेसी क्या है, हम कोशिश करेंगे इस चीज को समझने की, और उसके बाद देखेंगे कहाँ तक जाती है. मगर हाँ, हम अपना जितनी कंस्पिरेसीज को, जितनी हेरसे को हम दूर रख सकते हैं, जितनी अपनी कॉन्वर्सेशन को हम फैक्ट बेस्ड या फैक्ट ड्रिवन रख सकते हैं, उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस होगा. ये एक बहुत सेंसिटिव टाइम है पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए. हम आहिस्ता आहिस्ता we are moving towards some sort of a scenario where there'll be a wider conflict. Currently you have Russia and Ukraine. You've seen how that has completely devastated the global economic order, global supply lines.
फॉर एग्जांपल ग्रेन सप्लाई जो आ रही थी यूक्रेन से, वो डिस्टर्ब हो गई। अफ्रीका के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 30% जो ग्लोबल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएन बेस्ड ग्रेन सप्लाईज दे रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, वो यूक्रेन से ओरिजिनेट होती थी। फर्टिलाइजर फॉर एग्जाम्पल दुनिया में रशिया से आता है, 60% ऑफ फर्टिलाइजर रशिया से आता है। एनर्जी की वॉर्स आगे जाके किस तरह शेप हो रही है, पाकिस्तान उस इस पूरी सिचुएशन में अपने आप को कहाँ पाता है। यानी आपके पास एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी है, एक तरफ आपके पास बांग्लादेश की इकोनॉमी है, एक तरफ आपके पास अफगानिस्तान की इकोनॉमी है जिसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। उनके तकरीबन $7 से $8 बिलियन न्यूयॉर्क में पड़े हुए हैं फेडरल रिजर्व में, जो नहीं छूटे अभी तक सैंक्शन की वजह से। So you have all of these things that are going on, and then you have what's happening in Pakistan. So we'll try to situate and locate all of these. मैं complete करने की कोशिश करें. Okay, so I will try to complete all these videos in about 15 minutes. This was an introductory video, and on all of my platforms. And I would want you to keep subscribing. I'm going to come up with new ideas. We'll try to touch new topics. We'll get experts on it. We'll get ground reports on it. And throughout the week, मैं आपको एक glimpse देता रहूंगा अपनी जिंदगी में, अपने सफरों की या ट्रैवल्स की, या जो मैं कर रहा हूँ अपने अपनी लाइफ के अंदर। और अपना ख्याल रखें। ऑब्वियसली जो आइडियाज अगर आपके पास हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें उसके नीचे, और मैं उन कमेंट्स के थ्रू जाऊंगा। और ट्विटर पे मुझे आप फॉलो करें। जैसे हम कह रहे थे, वजात के साथ भी ये बात हुई थी कि मुश्किल तो होता है बाज़ औक़ात बात करना चीज़ों के ऊपर, without getting accused for anything. You know, people can accuse you of having one side or not. People don't realize, but it was Musharraf's first few years where some of the best Pakistans got, which is true, because of why Musharraf, the economy, why was doing so well under Musharraf is because of the global war on terror, and because of something called the coalition support funds. Pakistan received, at least on paper, the Americans sent Pakistan up to um, 21 billion dollars, out of which $13 billion were unaccounted for according to the government accountability office. So हम इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यूएस मिलिट्री प्लानिंग की ही बात करेंगे कि वो किस तरीके से प्लान करते हैं। So something called the Pentagon quadrennial reports, हम उनकी तह तक के अंदर भी जाएंगे। जीओए अंदर आता है यूएस कांग्रेस के अंडर, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के अंडर। वो क्या कहते थे, उनकी अपनी अकाउंटिंग क्या कहती थी कि पैसे वो दुनिया में जो दे रहे हैं पाकिस्तान को, इजराइल को, इजिप्ट को, यानी एज मेजर नॉन नेटो एलाइज फॉर एग्जांपल, इन सब चीजों के ऊपर भी हम फोकस करेंगे अपने एपिसोड्स के अंदर जैसे हम आगे जाएंगे। तो जस्ट टू गिव यू गाइस अ ब्रीफ आइडिया ऑन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स में भी हम बात करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस की, कि जो रिसर्च और यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के अंदर किस तरीके से मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स फॉर एग्जांपल कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, या जर्नलिज्म स्कूल जो है वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहाँ पे हमारे अहाद हुसैन साहब जो SAPM है, रह चुके हैं अब तो, फॉर्मर एडिटर ऑफ डॉन भी, वो भी अपना कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल से पढ़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी उस यूनिवर्सिटी के थ्रू गए। हम बात करेंगे यूएस मिलिट्री प्लानिंग की, टाइप्स ऑफ डिफेंस रिव्यूज की, उसके वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। बेसिकली some videos, some articles to share with you. हम बात करेंगे किताबों की, और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि नेटिव कोलैबोरेटर्स की हम बात करते हैं, जैसे क्यूबा में बतिस्ता था, उसको ओवरथ्रो किया कैस्ट्रो ने। वियतनाम में साउथ वियतनामीज जो थे वो कोलैबोरेटर्स थे, they were collaborators. In Iran you had the Shah of Iran. In Pakistan you had a long line of native so-called collaborators who were collaborating with major powers, mainly the United States. So, and of course we'll take you on a journey as well. And if you have any comments, how do we deal with the censorship that we have? It's obvious no one from outside will speak about it. Well, we've always had, if you're talking about we as in Pakistan having censorship, then Pakistan has always had censorship. Why? Well, because of how Pakistan is structured. You have interests that have traditionally controlled newspapers, be it Dawn.com, be it the news, Jung, and so on and so forth. So, you have all of this infrastructure, established legacy infrastructure that is
part of governance and the state, and over time it reveals itself even more. So we'll explore all of um, these ideas. सऊदी अंडर एमबीएस, मैं एक शो करता है डिकोडेड के नाम से, डिकोडेड टीआरटी के नाम से। तो हमने 83 के करीब एपिसोड मैंने लिखे और प्रेजेंट किए, और जब हम कर रहे थे 2020 से लेके 2021 तक, यानी आप समझ लें 1 साल वो शो चला। 5-5 मिनट के एपिसोड थे जो लिखते थे हम, और जाके एक स्क्रीन के सामने, रेड स्क्रीन के सामने प्रेजेंट करते थे। तो उसके अंदर से मैंने कोई 10 एपिसोड्स एमबीएस के ऊपर लिखे होंगे, और उसका जो तुर्की की पोजीशन थी सऊदी और एमबीएस के हवाले से स्पेसिफिकली, वो थी थ्रू जमाल खशोगी इंसिडेंट। इस्तांबुल यहाँ से दूर नहीं, अपना हम 411 की बात कर रहे हैं। When in 2018 October 3rd, Jamal Khashoggi went to the Saudi consulate to get some documentation for applying for a divorce and getting married to Hatice Cengiz at the time. And he went in on the 3rd of October, and then he didn't come out. And as things emerged through wiretapings, something that Pakistan is quite, these days, Pakistan is experiencing a lot of wiretappings and a lot of audio recordings that are coming out. But at that time, you had recordings that came out that basically said that there was this kill team that came on 2 private chartered flights from Saudi Arabia, emanating from different transfer points, landed in Istanbul, went to the Saudi consulate, waited for Khashoggi to come in. He came in, they held him back, and then over the course of the next few hours, as Hatice Cengiz was waiting outside, allegedly his body was dismembered and his body parts were exhumed. And that's the story that we have. What happened as a result of it was that relations between Saudi Arabia and Turkey went down the drain, so to speak. और बहुत बुरे हालात हो गए थे। इसके साथ साथ कतर क्राइसिस भी 1 साल से चल रही थी उस वक्त तक, 2017 में। Upcoming elections where in Turkey, elections have already ended with Recep Tayyip Erdogan winning re-election. If you're talking about elections in Pakistan, I don't think elections in Pakistan will be held anytime soon or this year. I might be wrong. I'm okay to be wrong because मेरी अपनी जिंदगी में मैं रिपोर्टर हूँ भाई। मैं तज्जिए नहीं दे रहा है, मेरे पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, मगर जो मैं हालात को देख रहा हूँ अभी, the way I see it, you're not going to have any elections this year in Pakistan. And it's clear why. Because power is very intoxicating, and if you allow things to progress as they have been progressing right now in Pakistan, so I don't think elections are a possibility. Because all the decisions that are being made are as a result of fear or vengeance or retribution. And in such a cycle, as history shows, and we have quite a beautiful history to learn from in Pakistan, starting from 1947, because we've all lived this history, right? मैं बड़ा हुआ कराची में, 1981 की पैदाइश हुई मेरी, तो बड़ा हुआ कराची में ड्यूरिंग द 80s एंड 90s। 80s में ज़ियाउल हक साहब का इंतकाल हुआ, तो हमारा ख़ानदान जो था वो पंजाब पार्टीशन वहाँ से उठ के आया था हिंदुस्तान से। उनका half of them were killed while migrating after partition. तो मैं उर्दू में कोशिश करता हूँ बताने की कि मेरे ख्याल से इलेक्शन इस साल पाकिस्तान में नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो हम जिस तरीके से रिवेंज की सियासत कर रहे हैं और जिस तरीके से रेट्रिब्यूशन हो रही है और एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है या हो चुका है, जिसके अंदर बोलना भी अब एक क्राइम समझा जाता है, तो मेरे ख्याल से इलेक्शंस नहीं होंगे इस साल। मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज के अंदर, मगर ये मेरा अंदाजा है basically. And as things are going around here, that's what I think for now. But apart from that, हम बात कर रहे थे एमबीएस से, फिर हम इलेक्शंस के ऊपर आ गए, और उसके ऊपर हम अब अपना बेसिकली एक दायरे में चल रहे हैं। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए यहाँ पे हमें लाइव करते हुए।
मेरे ख्याल से another 5-10 minutes and we'll be done for an introduction. It's more than enough. We'll have a lot of things to talk about. I hope we have a lot of things to talk about. I hope that you guys don't get bored as we embark on this journey. और मेरी कोशिश होगी कि मैं अंग्रेजी सवालों का जवाब अंग्रेजी में दूं और उर्दू सवालों का जवाब उर्दू में दूं। और देखें, मैं क्या मिस्टेक हुआ क्या नहीं हुआ इसके ऊपर तो मैं आप सबसे नहीं कह सकता क्या गलती थी क्या सही था। मैं आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ और मैं आपको सिर्फ एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर सकता हूँ कि यार कि जो मैंने देखा क्या हो रहा था उस वक्त जमीन पे या ऑन द ग्राउंड, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं किस तरीके से चीजों को देखता हूँ। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, या उनकी कोई बुनियाद नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता हूँ जिस तरीके से मैं उन चीजों को देखता हूँ। बियॉन्ड दैट, we never get bored from lives. They are spontaneous and extempore. Yes, lives are spontaneous and extempore, and people want to be told a story. And people have a lot of questions these days because how many days has it been since Imran Riaz Khan has been missing? किसी को पता है? कोई does anyone even care कि कितने दिन हो गए इमरान रियाज खान को गायब हुए हुए? पता नहीं है, मुझे नहीं पता। खैर एनीवेज, तो ये इमरान रियाज खान से ना मेरी आज तक भी बात हुई है ना मेरी मुलाकात हुई है। 2018 या 14 में वो सीन पे आए थे, मैं पाकिस्तान से तक जा चुका था। 2014 में मैं अल जजीरा के साथ था, 2012 से 2015 तक मैं अल जजीरा के साथ था और उसके बाद मैं आ गया TRT। और मुझे हमेशा ये तासुर था कि जी अपना इमरान रियाज खान हक में बात कर रहे थे उस वक्त DG ISPR और आर्मी इश्यूज और अरशद शरीफ जिनके साथ मैंने काम भी किया हुआ था। तो ये सब एक ही टाइम पे एक ही किस्म का नैरेटिव लेके जो उस वक्त प्रो इमरान खान था, जो उस वक्त क्योंकि 2014 में आप याद रखें कि दिसंबर में पहले तो जून जुलाई में ज़रब शुरू हुआ, सही है, तो उसके लिए एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई क्योंकि ये वजीरिस्तान साउथ नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के अंदर जो मामलात थे हालात थे, पाकिस्तानी तालिबान की पेनिट्रेशन थी, उसके बाद अलकायदा लिंक ग्रुप्स भी बहुत सारे थे, तो एक बहुत ही एक कैओटिक एनार्किक सिचुएशन थी। और फिर दिसंबर के अंदर उस ज़रब के की बुनियाद के ऊपर जो APS पेशावर में हमला हुआ, उसके बाद एक एक और सिलसिला कहानी शुरू हुई और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ आगे बढ़ी। फिर इमरान खान का आना 2013 के अंदर, लाहौर का जलसा 2012 का मुझे याद है जो शुरू हुआ, कराची में जलसे हो रहे थे, तो एक बड़ी कंटेंशियस सी सिचुएशन रही है। और इसके अंदर कौन विलन बना कौन हीरो बना, उसके बाद कौन सा हीरो कौन सा विलन बना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ इवेंट्स हैं जिसको हम सिर्फ फैक्ट्स और हिस्ट्री को सामने रखते हुए आगे लेके चल सकते हैं। हाँ, फिलहाल जो हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद है वो इनएफिशिएंट, तो आप मेरे ख्याल से एक अच्छा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे, मगर जो रिपोर्ट्स और अगर आप पूछें पाकिस्तानियों से, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में हर तबका बहुत परेशान है, हर तबका बहुत दबाव के अंदर है। और ये तो एक हकीकत है इसका। मैं ये नहीं कह रहा ये चीज आप क्रॉस शॉट्स उठा लें शुजा नवाज साहब की जो एक अथॉरिटी समझी जाती है, आप पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री उठा लें हुसैन हक्कानी साहब की जो एक अथॉरिटी समझी जाती है, आप कोई सी भी किताब उठा लें पिछले 20, 25, 30, 40 साल, 50 साल में, मुबशिर हसन की आप उठा लें, जुल्फकार भुट्टो के ऊपर जो किताब थी, मुझे कभी टाइटल याद नहीं आ रहा है, स्टैनली वुलफर्ड की आप किताब उठा लें अगर आप, तो तो आपको पता लगेगा। फिलहाल मेरा कोई और चैनल ज्वाइन करने का इरादा नहीं है फुल टाइम, मगर मैं फ्रीलांसिंग जरूर कर रहा हूँ कई कुछ चैनल्स के लिए। कनाडा के अंदर, UK के अंदर कुछ चैनल्स हैं जिनके लिए मैंने अभी ये टर्किश इलेक्शंस हाल ही में जो है उनके लिए फ्रीलांसिंग की थी। इससे पहले मैं अपना जो 20 साल का मेरा वो रहा है उसके अंदर मैंने अल जजीरा के लिए फ्रीलांसिंग की कोई तकरीबन 3 साढ़े 3 साल। उसके दौरान ही मैं नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कतर का जो कैंपस है उस पे एडजंक्ट प्रोफेसर यानी कोर्स उनके लिए डिजाइन किया और टीच किया ऑन डिजिटल जर्नलिज्म, तो वो भी आप फ्रीलांस ही समझ लें। वाइस न्यूज के लिए मैंने फ्रीलांसिंग की कई साल, कराची वायलेंस के ऊपर, जब उस बड़े भाई हमारे जो हैं कराची के जो आजकल लंदन में पाए जाते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब, कराची की आवाज, और खैर हम तो बड़े हुए हैं उनके शैडो के अंदर और हमें याद है वो दौर जब
एक फोन कॉल पे पूरा शहर बंद हो जाता था। तो ये सब चीजें हैं जिसका हम बात करेंगे। बेसिकली वी डिस्ट्रॉयड फाइनेंशियली, ethically. I'm going to go through it. uh, Glad to see you from Turkey. We destroyed financially and ethically. Well, we are on the path of destruction. But you all also have to keep in mind, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ये चीज नहीं है, ये है पूरी दुनिया में ये चीज आ रही है। What is your map? Actually, you know what? I can run these things. Um, US says it would restrict visas to Bangladesh if elections are not held. Yes, the US did. Blinken did basically make a comment on this. You're absolutely right. We are destroyed financially and ethically. I don't know about that, honestly. I'm not an economist, but things do look really bad. And what is your view about Dr. Afia Siddiqui? What does it mean that keys to release Afia is present in Islamabad? Honestly, I have no idea, but I do know of Dr. Afia Siddiqui and Dr. Fawzia Siddiqui, her sister, who has been trying for over a decade now to get Dr. Afia Siddiqui released from US custody, where she has been held for years. Another victim of the global war on terror. Under what circumstances? ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इतनी इसके ऊपर एक तो एक फैक्ट्स हैं, फिर कंस्पिरेसी है, फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, और किस चीज पे आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे आपको नहीं पता। अच्छा जी, कैन टर्की influence Pakistan to hold elections? Absolutely not. Turkey is a sovereign country and Pakistan is a sovereign country. Both are they basically करते हैं कारदेश मुमलिकत और ब्रदरली स्टेट। तो तुर्की के जैसे वो कहते हैं कि अजरबैजान है, वो तो उनके जुबान भी एक बोलते हैं ना, अजरबैजानी इज बेसिकली टर्किश। और फिर एक है पाकिस्तान, और बहुत मोहब्बत करते हैं टर्क्स पाकिस्तानियों से, और बहुत उम्मीदें रखते हैं कि जी एज ओनली न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान है दुनिया के अंदर मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, तो उसको यानी मजबूत रहना चाहिए। मगर मेरे ख्याल से टर्की कैन नॉट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान टू होल्ड इलेक्शंस। Moving on. Next question on your screen is allow people to post their questions under your tweet announcing live streaming. That would help. I think it is. You can post. It's open comments on all my platforms. I don't block comments, or I don't restrict comments like certain Pakistani foreign ministers, prime ministers, even certain journalists in Pakistan, so-called journalists at least, who are hiding their comments. I don't do that. Next question. Please teach youth to think rationally and look at things from an international perspective since you are outside of Pakistan. I think ये जो है ना फोन, इसने हम जितना भी कह लें लोकल पर्सपेक्टिव, रीजनल पर्सपेक्टिव, अब हर इंसान का जिसके पास एक स्मार्टफोन है हैज ए इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। और ना सिर्फ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से मुराद नहीं है कि जी आप पूरी दुनिया की आपको खबर है या यू शुड केयर अबाउट इट, मगर आप पूरी दुनिया में आपका मुकाम किधर है, कहाँ हैं आप? I think that's more important. I hope that answers the question, but we'll continue this as well. This could be a good talking point. Pakistani youth and international perspective. इस मौजू पे बिल्कुल बात हो सकती है. Next up, are you satisfied with level of journalism in Pakistan? I'm talking about so much polarization news channels. Okay, if I can be honest, very honestly, I don't think there's any journalism left in Pakistan. It's all influence operations. Even in the US, there's not much journalism left in the United States. It's all influence operations. It's a bunch of corporations, यानी कुछ इदारे हैं, कुछ businesses हैं, concerns हैं, जो कंट्रोल करती हैं, मगर जैसा हमने देखा, और एक्चुअली मेरे ख्याल से किसी ने ट्वीट भी की थी और बाद में डिलीट भी कर दी, एक ट्वीट भी की थी, डिलीट भी कर दी, एक बहुत सीनियर सहाफी थी रॉयटर्स की, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि मुझे किसी ने वो शेयर की थी, एंड आई वाज लाइक मैं समझता हूँ कि कोई क्यों ट्वीट डिलीट करता है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या चीज किसको बुरी लग जाए किसको पता। अच्छा जी, this is true. Channel owners called for briefing late last Wednesday with DG ISPR. Major General F joined. No niceties, no handshakes, just laid down the law. No coverage of Imran Khan, and left. I can say that, I guess. And left room within 5 minutes. Pakistani media's eye coverage since Wednesday is there for all to see. So I guess this kind of talks about polarization. News isn't journalism. Not all storytelling is driven by facts. We live in the era of fake news, गलत खबरें या झूठी खबरें या anonymous खबरें, sourcing को काट दो, बंदों को हटा दो,
किसी भी तरीके से न्यूज कंट्रोल करो, मगर न्यूज कंट्रोल नहीं हो सकती, खबरें कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि तो इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम रिलायबल सोर्सेज, क्रेडिबल सोर्सेज और हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल सोर्सेज के ऊपर फोकस करें और फिर अपना दिमाग खुद ही बनाने की कोशिश करें। चलें जी, इसके बाद डज एर्दोआन लाइक पाकिस्तानी मैंगोज? You know what? That's a funny one. I think you should ask the Pakistani Prime Minister. अच्छा जी, मैंगो डिप्लोमेसी गोइंग इन फुल स्विंग, एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने देखा शहबाज शरीफ साहब भी आम लेके आए एर्दोआन साहब के लिए, और उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो लक्समबर्ग प्राइम मिनिस्टर या उनके जो लीडर थे उनके लिए भी आम लेके गए थे। तो कम से कम पाकिस्तानी मैंगोज आर स्टिल हैव सम वैल्यू, राइट? सो आई डोंट नो हाउ डू यू मोनेटाइज दैट। उसके बाद अब आगे आ जाए जी, टर्की पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को कैसे देख रहा है? बहुत ही कंसर्न के साथ देख रहा है, क्योंकि टर्की हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान के एज अ ब्रदरली कंट्री उसके अंदर अमन हो, इकोनॉमिकली वो प्रोग्रेस करे, हर इदारा अपने लिमिट्स में रह के काम करे, पॉलिटिकल अपहीवल ना हो, क्योंकि आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि तुर्की के अंदर भी, यानी 1923 जब से रिपब्लिक सामने आई आपकी, टर्किश रिपब्लिक जो अतातुर्क साहब सामने लेके आए, तो उसके अंदर ये देखा हमने कि उसके फौरन बाद अतातुर्क साहब 1938 में मरे, का इंतकाल हुआ उनका, इन्नू साहब आए, फिर देमिर किरात पार्टी आई अदनान मेंडेरेस साहब के साथ, उनको 1960 में लटका दिया गया। फिर उसके बाद एक 60s और 70s के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल हुकूमत आती थी जाती थी, फिर 80 में एक और कू आई। तो एक शॉर्ट टर्म यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स ने इतनी तबाही कर दी थी कि कोई हुकूमत सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। और एर्दोआन साहब के आने से पहले तक हर हुकूमत का यानी 1 या 2 या 3 साल इक़्तिदार में होती थी और फिर कोई चीज होती थी पीछे बिहाइंड द सीन्स, और this is all part of historical facts. You can go and look into this. So because Turkey has experienced so much upheaval because of these inconsistent, arbitrary decisions and policies, तो उसको भी एहसास होता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ये आर्बिट्रेरीनेस, ये ऐसी यानी गुस्सा, नफरत, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी गई है तो उसके अंदर लोगों को थोड़ा पुल बैक करने की जरूरत है। अपनी अना को उतार दो, अपनी अना के घोड़े से उतर आओ नीचे और हमारे लेवल पे आगे बात कर लो, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, सही है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जितनी खुश अखलाकी, जितनी हमदर्दी, एम्पैथी के साथ आप आगे बढ़ा सकें चीजों को, वो ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट, सॉरी इफ आई एम बीइंग अ लिटिल लेट। How do you see Turkey's next 5 years under Erdogan's leadership? Listen, Turkey is going to emerge as a power, as a regional power with a Turkic belt running from Turkmenistan, Kazakhstan, all the way to Turkey. और मिलिट्री प्रोग्रेस है इनके पास, इनका जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से चेंज होकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कंसोलिडेट हो चुका है एर्दोआन साहब की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से टर्की के अंदर अपना सही है, इनके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लोग बहुत परेशान भी हैं इकोनॉमिकली यहाँ पे, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर ये चीज चल रही है। और अगर ये जो अभी अपॉइंटमेंट्स हुई है फिलहाल, ये जो मेहमद शिमशक को वापस लेके आए हैं, मेहमद शिमशक से मेरी मुलाकात हुई थी 2016 जुलाई 14 को, कू से एक दिन पहले, निजिब रेफ्यूजी कैंप के अंदर मेहमद शिमशक, जो अभी उनकी तस्वीर भी मैं आपको अपना शायद अगले प्रोग्राम ये हम बात कर सकते हैं, एक शो आइडिया हो सकता है इसके ऊपर पूरा। तो वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं तुर्की के, और वो कह रहे हैं कि जी हम ये अनऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज जो थी, जो एर्दोआन साहब ने निकाली थी कि जी इंटरेस्ट रेट्स को लो रखो, इन्फ्लेशन को बढ़ने दो ना या ना बढ़ने दो, उनको हम खत्म करेंगे, मगर प्रैक्टिस में किस तरीके की चीज होती है ये हमें देखना पड़ेगा। मगर इनके अंदर ये बात है कि अपना ये स्टेप बैक लेके रीअसेस करते हैं सिचुएशन को, अपनी सिचुएशन को, एंड देन दे कम अप विद न्यू आइडियाज। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Any plan on doing interview with Andrew Tate? No, not yet. No plans just yet. But if he wants to talk to me, sure, why not? I'm not Greta. For future videos, suggest to split it in parts. First for Pakistan, then for international relations. Good idea, Tabassum Kabir. I'm going to take a picture. You know what? These comments are already showing up, so that's a great idea.
First part Pakistan, then international relations, or first part international relations and then Pakistan? Very good. Okay, Ali bhai, LinkedIn के questions भी लें. LinkedIn के questions आ रहे हैं. आपका question आ गया मेरे पास. अच्छा जी, उसके अलावा only Pakistani mangoes. Well, I hear Mexican mangoes are great, and now as innovations in technology, mangoes do consume a lot of water to grow. So that is something that a water scarce country जहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है और अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर और भी ज्यादा किल्लत होगी पानी की environment आपकी बिल्कुल change हो रही है और अब ये भी links हैं causal links between heat, environment और conflict. तो पाकिस्तान में जो हो रहा है इसका जो conflict है political इसका ताल्लुक environmental changes से भी है हम उसकी बात भी करेंगे. The environment or Jeffrey Sachs कहता है कि geography decides the fates of nations, right? हम उसकी बात भी करेंगे. Okay, next up, इतने अच्छे हैं हमारे आम के हम mango diplomacy करने. Okay, the next question, please name some credible source of information and commentary. There are many credible sources of information and commentary, but it depends on whose credibility are you counting on or looking for. For example, the BBC is a credible source of information from a certain perspective. For example, the New York Times is a credible source of information for a certain perspective. But for someone on the other side, maybe someone who follows Matt Taibbi, for example, these are all fiction writers. They call them fiction writers because they are, according to the critics, focused on culture wars, wokeism, on Pax Americana. So, this idea of information and commentary, I think, and I don't want to, limit myself here, but incredible sources can have credible information, and credible sources can have leaked or tainted information. For example, the New York Times coverage, breaking news exclusive on this guy, Texera, and releasing of these intelligence docs. How the hell did that happen, right? And especially if the document collection was from different parts, and they're saying, oh, all of this was coming to this guy, so it doesn't make any sense. Common sense. The most credible source of information and commentary is common sense. And I think that is something that is missing in our coverage these days. We'll talk about this more as well. If you offered to join a news channel, which one would it be? Right now, none of it. You have brilliant English accent. Where did you study? Yes, well, I went to St. Michael's Convent School in Karachi, Pakistan, till the 10th grade when I was kicked out by a person called Mrs. Seema Nayyar. And she told my mother specifically, Mrs. Mustafa, your son will not do anything academically. He will not achieve much academically. So I think you should try to put in something on the side. But I guess I was, I had that tenacity in me to keep going. I was able to go to the US, where for my undergraduate, I went to St. Louis because my brother-in-law was studying, getting his master's in DDS. And I joined the political science department at St. Louis University. I was always inclined, thank you, Ahmed Rashid and Taliban. It's the book that inspired me to basically go to Afghanistan and start this journey started with a book. And my father, he pushed me. He was a businessman. He wanted me to stand on my own 2 feet and be my own person. And then step by step, and you talk about an English accent, I was also given, surprisingly, not many people know this, I was given accent classes. When I went to Canada, because I had a thick Pakistani accent, CBC sent me to York University to get my accent more, I guess, make it more understandable. But it's a process. It comes with age, it comes with time, and it comes with talking, I guess. But having said this, I'm a shy person. I don't like interacting, or I keep to myself. And it might seem odd, but this a lot of people that are in this kind of field are very shy, I guess. Okay, moving on. What is your take on Hakan Fidan becoming the new? That is Hakan Fidan is one of those guys, as we say,
who knows where all the quote unquote bodies are buried. Because keep in mind that he's been the spy chief since, since 2011, 2012. There's a Syrian conflict or Turkey's entrance or reactions when the Obama administration was there as part of the scene. Hakan Fidan has been a central figure in that. And Turkey's fight against terrorist groups, ISIS, Daesh, or the PKK, Hakan Fidan has been a central instrumental character in that as well. So this guy knows where all the quote unquote skeletons are buried, so to speak. And now, as the Arab League is reorienting, opening up doors to Bashar al-Assad, there's a possibility of Syria joining other, forums and so on and so forth. Turkish diplomacy will have to play a critical role, and Hakan Fidan will play a critical role in that as well. Imagine him meeting Anthony Blinken and Sergei Lavrov. Yeah, Sergei Lavrov is definitely a player. Blinken has been very disappointing from a Turkish perspective, because there's the relations haven't really, especially over the past few years, haven't really been that great. But that's not necessarily because of Biden. It also happened under Trump with, for example, the Reverend Brunson, who was kept, in detention, and then there was a deal. So relations between Turkey and the US haven't been that great. That's why relations between US and Mehmet Şimşek is the incoming finance minister, economy minister of Turkey. And he's the man who's been charged with controlling inflation, getting interest rates up, hopefully, to control inflation, getting more orthodox economic policies in the mix. Ali Bhai, voice is not clear. It should be more loud. Okay. Can you hear me, guys? I hope so. I hope you can hear me. Okay, if you think unbiased channel in Pakistan, I have no idea. YouTube. Okay, happy to see you on YouTube. Awesome video. Great job, Ali Bhai. Thank you, guys. Thank you for the love. Keep subscribing. First foray. Lights going. Loved your live stream, your channel. It continues to grow. See more of you. So the stakeholders in Pakistan are busy transforming a banana republic to a mango republic. That's a very good. That's funny. That's funny, yes. Okay, from a banana republic to a mango republic. Mango diplomacy all the way. What we know about Turkey's new cabinet? Well, I've been talking about Hakan Fidan. I spoke about Mehmet Şimşek. There are a few other characters in the mix. For example, Ali Yerekali. He was the governor of Gaziantep, bordering with Syria. We're approaching 42 minutes for the first one, guys. Okay, what is the reality of Treaty of Lausanne after 2023? The reality remains the same. I don't think these things just go out of favor or go out of vogue just because there's an expiry date. But you can, you can renegotiate better terms. There's a Canal of Istanbul that is coming through. So yeah, a lot of changes will come about, but the core of it, I think, will remain the same. But that's an episode. Treaty of Lausanne could be an episode. You're absolutely right. For all-time favorite journalist, Ali Musa, good luck. Thank you so much. Thank you. What you miss about Pakistan? Of course, I miss my friends. People I grew up with. My father passed away in 2010. He was 54 years old. I miss him. A lot of my memories about that. Audio is perfectly fine. Need your opinion, thoughts on Ethiopia and Egypt water dispute. That's an episode. Good call. Okay. Your favorite journalist in PK? I had quite a few favorite journalists growing up. Talat Hussain was a great journalist, right? What happened to that? You live long enough and your heroes become villains, I guess. Time for Exploding Mangoes remake. Ask Mohammad Hanif. Great writer. Okay, what do you think? Long Russia-Ukraine conflict with loss? There's no end in sight for the Russia-Ukraine conflict. What might end up happening is the conflict expands in different spheres. For example, Taiwan might heat up. You might have Iran heat up on two ends, Azerbaijan and Afghanistan. That could be a possibility. So you're looking at an expansion of conflict, not a depreciation of conflict. Okay, how is the Turkish media landscape apart from TRT? Voices critical of Erdogan, can they operate freely? You want to hear something funny? What is the most watched channel in Turkey?
Which one? Let me tell you, it's Fox. Fox is completely anti-Erdogan. It's owned by, and this is statistics to prove it, don't take my word for it, but there's only one Fox, right? So Fox is anti-Erdogan. It's controlled by Rupert Murdoch, and it's the number one most watched channel in Turkey. And it's completely critical of Erdogan and his policies, right? But just because you're popular doesn't mean you're going to win. Because while you have one Fox, you have a lot of other channels that are not anti-Erdogan or anti his policies. Good question. Might be something. How embarrassing was PM? Okay, unpredictable relations of Iran and KSA. Not really unpredictable relations of Iran KSA. They're just opening an embassy. I heard. Like one of them, vice versa, is opening for the first time, and they're talking about a maritime union: Iran, UAE, Saudi, a few other Gulf countries, and Pakistan and India as well. So as the US is pivoting and trying to focus on Russia and China, it seems that there's some sort of confluence of interests in the Persian Gulf, so to speak. And these countries are aligning and trying to figure out and sort out their issues. Are Turkish more strong as a nation than us? Yes, because Turkish nationalism was beaten in down the throats of these people to create a new identity. Never happened in Pakistan, was never allowed to happen in Pakistan. And this idea of identity and identitarian politics is very important. So yeah, right here. Yeah, this idea of identitarianism is very, very important. I think we'll keep it going for another 4 minutes and I'll call it. Um, I didn't expect such a huge feedback to come in, but if this continues, we're on to something. I promise you guys, I'm going to get more organized topics. I'll get more, and we'll keep it short, keep it 15 minutes, but now we're going on 40 something. But this idea of a new contract, एक नई आइडेंटिटी, एक नई इमेजिनेशन. जब मैं पैदा हुआ पाकिस्तान में 1981 में, और जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम बात करते थे ये सिंधी है, वो बलोची है, वो उर्दू स्पीकिंग है, वो पंजाबी है, नहीं वो ये है, वो जट है, वो ये बलोची व्हाटएवर, ओ उसको ट्रस्ट नहीं करो, उनको ट्रस्ट नहीं करो, उनको ट्रस्ट नहीं करो, उनको ट्रस्ट नहीं करो. अच्छा, अब जब मेरे नीसेस और नेफ्यूज की एज में, अब ये कोई नहीं बात करता कि यार वो बलोची है, पंजाबी है, सराइकी है, वो बातें नहीं होती. अब बातें होती हैं पाकिस्तानी होने की. तो ये एक फॉर्मेशन है आइडेंटिटी की, और मेरे ख्याल से इसके अंदर बड़े लोगों का किरदार रहा है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जो रहा है, फर्स्ट हम डिवीजन या पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, निशान वो तीर की बात करते हैं, सिंधी उसकी बातें होती हैं. मगर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो दो किस्म के फोर्सेस हैं यहाँ पे. एक तरफ ऐसे फोर्सेस हैं जो चाहते हैं कि ये डिविजन्स बरकरार रहें, डिवाइड एंड कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, सही. और एक तरफ ये थ्रस्ट है कि ये डिविजन्स खत्म हो, एक नई आइडेंटिटी सामने आए, जो ये सब चीजें जो हम बात करते हैं, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, ब्ला 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 ब्ला, और जो पॉलिटिकल ग्रुप्स इनको सपोर्ट करते हैं, एएनपी, जेयूआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, so on and so forth. So there are two big divides in all of this, right? And I'm not saying it's clear cut, but that's how it is. Expanding the Russia-Ukraine conflict will bring more financial hard times to EU. What is EU's plan to save itself from this? Expanding, well, EU is completely in the dark, literally, because it doesn't have any energy. And their energy supplies were coming from Russia, Nord Stream pipeline. And now they've run out of energy, industry shutting down. The Europeans are in a bad shape. And at the cost of it, Turkey is in a good position. Okay, why you quit TRT? Well, I was on a year-long contract with TRT, and I'll do a show on this, comprehensive show on how TRT changed while I was there, how I grew at TRT, how I helped set it up in 2015 May, from 2015 May onwards. And there's so much to talk about on that subject. I saw TRT grow, expand, grow even more, decline in certain ways.
and eventually, people have different expectations as anything. जिस तरीके से चीज शुरू होती है हमेशा उस तरह इख्तिताम नहीं करती. जिस तरीके से जो उम्मीदें, जो एक्सपीरियंसेस, और कभी कभार हैविंग टू मच मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की हम बात करते हैं ना, तो मेरा आखिरी जो यूक्रेन के बाद, यानी लास्ट ईयर यूक्रेन के बाद अक्टूबर की आप बात कर लें, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हम कहते हैं जी कोई चीज़ है चेरिश करने वाली. मगर जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं, कभी कभार लोग चाहते हैं कि यार उन्हें कुछ याद ना रहे. Institutional amnesia is better than institutional memory. Sometimes it's easier to forget. अच्छा जी, eastern part of Turkey is poor? Why eastern part of Turkey is poorer? That's not true. There was an earthquake there that destroyed $150 billion worth of infrastructure, so it did make it poorer. It was also the what do you call, the breadbasket, जहाँ पे vegetation, agriculture based था वहाँ के, वो तबाह हो गया. So yes, you're onto something there. Behind high voter turnout in Turkish elections. The reason behind high voter turnout in Turkish elections is they have a long experience of doing it. They've got international monitors that come in. A lot of it has to do with culture and culture wars. So people are extremely politicized to go and cast their ballots because they think they can make a change. Something to talk about. I do think Afghans are more national compared to anyone else. Afghans are, well, they've got their sub nationalisms that compete with the larger Afghan identity, right? Especially if you go towards the NDF and the Tajiks that kind of go against the Pashtuns, and the Pashtun narrative sometimes goes against that. But there is now a thrust to create a supra Afghan identity, has been. And it's always opposed to something, the Pakistani identity formation for the longest time was opposed to being Indian. If you're not Indian, you're Pakistani. Same goes for if you're not Pakistani, you're Afghan. So it's almost always against something. We'll talk about that as well. Do you see Erdogan trying to calm situation, Pakistan act as a mediator? Or do you think Turkey has a very, 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 very strong policy of not interfering in other countries' issues, but it can offer mediation as it did with Russia and Ukraine? I don't think that Turkey will want to interfere in brotherly countries' relations at all. But having said that, it is in Turkey's interest, and it is in a lot of other people's interest to have Pakistan economically viable, politically viable, socially viable. मुबशर जैदी की वजह से तो नहीं क्विट किया. नहीं यार, मुबशर जैदी बेहतरीन आदमी है. He's one of the best journalists that Pakistan has produced. अच्छा, yep, okay. Any plans to fall back to Pakistan? What do you think? I'll leave that comment open for suggestion. Do you think I should fall back or not? Okay. Yeah, Mohit Pirzada these days is doing a lot of revelatory good work. Any comment to Bajra Saga in France today? Yeah, I saw the video. और मैं दोनों तरफ को चीजों को देख सकता हूँ. पहली चीज तो ये कि किसी की भी तौहीन करना, कहीं भी किसी पब्लिक जगह के ऊपर तौहीन करना, बेइज्जती करना या वो करना इज अनकॉल्ड फॉर. बिल्कुल नहीं. लेकिन दूसरी तरफ जब आपका मुल्क तबाह हो चुका हो और आपको यानी आपने अपने मुल्क को तबाह होते हुए देखा हो और आपको ये पता हो कि पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान का उसके अंदर किरदार या तो कंटेन करने में या किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान अफवाज का किरदार तो था ना. तालिबान से पहले सोवियत जब थे, उनको हराने में पाकिस्तान ने बहुत एक अहम किरदार अदा किया, प्ले किया. उसके बाद जब अमरीकी चले गए खाना जंगी के दौरान, पाकिस्तान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया. और हम ये सब हिस्ट्री जानते हैं. हम जानते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से थे. हिकमत यार साहब थे, अहमद शाह मसूद थे, ये सब किरदार थे. फिर उसके बाद जब अमरीकी आ गए तो उसके अंदर बहुत एक डिफरेंट चीज हुई. तो पाकिस्तान का किरदार तो वाजे है. अब फ्रॉम एन अफगान पॉइंट ऑफ व्यू, एक अफगान पर्सपेक्टिव, अगर इतना वाजे किरदार है और फिर भी सिचुएशन खराब रही है, तो आप तो किसी ना किसी को ढूंढेंगे. तो किसी भी इंसान के ऊपर एक तो इल्जाम लगाना, तराशी करना, सही पाकिस्तानी जनरल, फॉर्मर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर, और दूसरी तरफ अफगान जो साहब थे एलिजिडली उनको निशाना बनाना इज अनकॉल्ड फॉर, दोनों तरफ से. Okay. Mohit Pirzada is doing a great job. Okay, guys, I'm going to have to call this because it's like already 54 minutes. Was great. Okay, Samsun. Yeah, I've been to Samsun. Samsun is very important in Turkish history because Ataturk, Mustafa Kemal
when he fled Istanbul, took the edict from the Sultan, the last Sultan, who was a British puppet. He left through the Bosphorus, made his way through the Bosphorus into the Black Sea, and landed in Samsun on his Gemi. उसका नाम था बंदेरमा, और उसका मॉडल अभी तक Samsun में मौजूद है. Great place. Okay, Mustafa, would love to put history to some of your next vlogs. All the best. Thank you so much. How can Istanbul Canal affect the significance of Strait of Bosphorus? Well, it's going to take a lot of traffic that was going to the Bosphorus Strait and divert it to the Istanbul Canal. That's how. Okay, next one. Next one up. Should Ali, this country is full of journalistic prostitution. Sorry. Okay. We need sane souls like someone. Okay. Okay. Would like your opinion on US general election, Biden's chance in winning. I don't think Biden has a chance in winning re-election. I think Trump is going to come back unless a miracle happens. Do you think it'll be ensured IK is not running for the next elections? I think so. But how is it ensured? That's something that we can talk about. Okay. We'll keep videos regular. You are a hit. Okay. Perfect. All the best. So I guess that's it. I'm going to end this broadcast. And I think as the first episode, which went on for 56 minutes, I want to keep this conversation going. You guys are giving me Champions League final in Istanbul, how Erdogan, etc. see it. Yeah, they're all football fanatics here, so I'm sure they love it. But बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब करते रहें. वो कहते हैं कि जी, जब तक आपके पास 1000 सब्स नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर. मेरे पास, मुझे नहीं पता भी कितने हैं इस ब्रॉडकास्ट के बाद, मगर मेरी उम्मीद होगी कि मैं ये कंटेंट इंटरेस्टिंग रखूं और आपसे आपके फीडबैक और कमेंट से करता रहूं. और ये डिवीजन की जो बात थी कि पहला इंटरनेशनल के ऊपर कर लें, फिर पाकिस्तान के ऊपर कर लें, पहला पाकिस्तान के पे कर लें, फिर इंटरनेशनल के ऊपर कर लें, ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं. और अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जुमे को शाम. वेल, टाइमिंग्स आपके पास हैं. पाकिस्तान के अंदर शायद 9 बज रहे हो, इस्तांबुल में शायद 7 बज रहे हो, और आपसे एक मुख्तलिफ लोकेशन से आने की कोशिश करूंगा मैं. मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और इसको शेयर करें, इस वीडियो को जितना कर सकते हैं. और अगर कमेंट्स आपके, प्लीज 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 अपने कमेंट्स करते रहें, भेजते रहें. और दैट्स इट. अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, टेक केयर.